Breaking updates coming in right now. Governments in Rajasthan and Odisha declared a half-day holiday in their respective states in view of the Ram Temple consecration ceremony on Jan 22nd. All public offices are to remain closed till 2:30 p.m. That is right, viewers. Top Public coming on Republic TV, and as we keep getting you more updates, let's tell you what exactly has been happening. Where we are seeing that there has been a big development coming in ahead of the Ram Mandir inauguration, and what we can tell you that a lot of states have declared a holiday or a half-day holiday on Jan 22nd. The upcoming Pran Pratishtha ceremony has prompted several states or central governments to declare it a public holiday or half-day in honor of this significant event. And what we can tell you, viewers, is that the governments in Rajasthan and Odisha declared a half-day holiday in their respective states in view of the Ram Temple consecration ceremony on Jan 22nd. All public offices are to be closed till 2:30 p.m. That is what we're learning of right now. We see that many states have joined the list, not just Rajasthan and Odisha, but we see that similar kind of provisions and similar kind of half-day or full holidays have going to be implemented in multiple states like Tripura, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Goa, Haryana, Odisha. All these states, Assam, Rajasthan as well. Let's go straight to Priyanka, my colleague who's joining us live from Ayodhya. She has been there for the past few days and is getting us all the top details. Priyanka, I'm coming to you at this point of time, and we see that multiple states have declared a half day or a full day in honor of the significant event on Jan 22nd. Take us through the details coming in, Priyanka. Well, that's right, Shivangi. You know, an entire city, the entire city of Ayodhya, the entire country, in fact, has been celebrating and looking forward to the 22nd of January. And that is how we are looking at the central government also making that, sending out that circular for a half day. Till 2:30 p.m. is when the government officials will be able to clock out on 22nd of January, because it is, as it was being said by the Prime Minister, and that sentiment has been echoed by the people of Ayodhya, calling it a second Diwali for many, as they are in fact obviously very sentimental about the 22nd of January and about the temple being made and about the temple then being open for the devotees to come and do their darshans as well of Ramlala. Now, of course, yesterday we saw that the statue of the Lord Ram, in fact, has been placed inside of the Sanctum Sanctorum. And now, subsequently, we are looking at these developments in the rest of the country as the entire country really, Shivangi, gears up for the 22nd of January. And we are looking at these developments because of the kind of sentiment, the kind of celebrations that people are, in fact, carrying out for the 22nd of January. How there are, the government officials are not any different from this, from all of the state governments as well. Now these kind of circulars are coming out, and that essentially shows us how big an event it is going to be on 22nd of January, how big an event it is for the people of the country, and how essentially emotionally attached that they are to the 22nd of January as well, because it is in all its for all its sense and purposes a second Diwali for the country of India. And that's essentially what we see here on the ground as well, because there are people who have come from across the country here in Ayodhya to give their to give their Shramdan, as they call it, from states like Maharashtra, from Kerala, from Gujarat, from Jammu Kashmir, from all of the other states as well, from length and breadth of the country. We are looking at people who are coming. That essentially is a tea stall as well that is being run by a gentleman from Delhi. So these are all sevas that are being given by people. Nothing has to be paid for. That essentially is also the kind of mood on the ground in Ayodhya, where people are in fact just giving their services. We'll try to speak to some of the volunteers as well as to how they are also gearing up for the 22nd of January, and how they are going to be celebrating and how they are going to be volunteering for the 22nd of January. आप लोग बताइए, आप कहाँ से आए? पुणे से, महाराष्ट्र। क्या कुछ करने आए हैं यहाँ पे? तैयारियों के लिए आए हैं, अपना श्रमदान देने आए? हम हमारा श्रमदान देने आए हैं और हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं। जैसे हम पुणे महाराष्ट्र में पंढरपुर, आळंदी, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर हम पूरे हमारी टीम 50 लोगों की अभी है सेवा करती है। बालाजी सेवा भी करते हैं। और इस बार हम 500 साल का जो इतिहास है श्री राम जन्मभूमि का अयोध्या के लिए, हम अपना कुछ श्रम, हमारा वक्त और हम जो चाहे हम मन तन धन से हम सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो इसलिए हमें बहुत आनंद हुआ है कि जहाँ हम सेवा के लिए हम यहाँ उपलब्ध है। तो 22 जनवरी ऐसा कहा जा रहा है कि एक दूसरी दिवाली के तौर पे मनाई जा रही है, एक पूरा बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है।
ये हमारे पूरे समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए ये बड़ा उत्सव है और ये दिवाली से कम नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि बरस में 2 बार दिवाली मनाई जाए, जो ये 22 जनवरी है कभी ज़िंदगी में भूली न जाए। जो कि ये अब हमारी जो सेवा आई है, जो हम बालाजी ट्रस्ट के सेवा करी है, जो कि हम 200-250-300 लोग से हम बालाजी में ही सेवा करते हैं, आलंदी में करते हैं, पंढरपुर में करते हैं, आज हम जगन्नाथपुरी में भी करते हैं। आज हमारा भाग्य है जो हमारे लोग जो यहाँ राम जन्मभूमि पे आए हैं सेवा करने, और 13 दिन के लिए हम यहीं पे हैं हमारा यहाँ से। और ये हमारे जीवन का सबसे अहम पल होगा जो कि हम अपने पूरे ज़िंदगी में भूल नहीं सकेंगे, जो हमारे पूर्वज ने हमने बनाया हुआ है। आज हम इस लायक हुए कि हम यहाँ पर आके अपना बेहतरीन समय यहाँ पर देने से। तो जो राजनीति कर रहे हैं इस पे, उनको आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये एक बीजेपी इवेंट है, वो कह रहे हैं कि ये मोदी अपने आप को भगवान राम बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक बीजेपी का इवेंट बनाया जा चुका है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे 22 को। किस तरह से देखते हैं? ये तो क्या है, इन लोग को क्या, इनके हाथ से अभी इनको लग रहा है कि हम पहले 10 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं, अगले और 10 साल तक हम काम नहीं करेंगे, तो इसलिए लोगों को भटकाने के लिए जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। एक देखा जा रहा है तो अब सनातन धर्म की शुरुआत हो गई, ऐसे लग रहा है फिर से 500 साल बाद। और लोग जब हिंदू लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सब मिलके जो आज जो काम कर रहे हैं, और जो ये राम जन्मभूमि के जो ये राम भगवान जी की स्थापना हो रही है, उसकी वजह से वो बौखला गए और वो नहीं चाह रहे कि फिर से हिंदू एक हो। इन्होंने आज आज़ादी के बाद जो इन्होंने हिंदुओं को बांटा था और जो अलग अलग जातियों में बांटा, और आज भी वो क्या कर रहे हैं, जाति का राजकारण कर रहे हैं, जाति को हर बांट रहे हैं, और खाली हिंदू लोग को बांट रहे, वो ना मुस्लिम को बांट रहे, ना और किसी जात को बांट रहे। उदित राज कह रहे हैं कि 22 के बाद में दलितों का कलयुग आएगा। ये नहीं है, कलयुग नहीं, उनके लिए राम राज्य शुरू होगा। इस आज तक दलितों को इन लोगों ने क्या किया, इनको अपनी वोट बैंक समझ के उन्होंने काम किया। दलितों के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। उन्होंने खाली वो जब इलेक्शन आते थे कुछ रेवड़ी बांट देते थे और उसके बाद वो कुछ उनके लिए कुछ नहीं करते। और आज मोदी जी ने दलितों के लिए बहुत काम किया है, और आज जो भी काम हो रहा है वो दलित नहीं, सब समाज के लिए हो रहा है। और खाली मोदी जी एक नहीं, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। पर वो ये जो इनके हाथ से जो इनकी वोट बैंक छूट जा रही है, उसके लिए लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी भी डिवाइडिंग वाली जो आप कह रहे हैं कि राजनीति अभी भी हो, नहीं, डिवाइडिंग वाली बोले तो ये ऐसी हो रही है कि हिंदू लोगों को भड़काया जा रहा है और बाकी लोगों को इनके विरोध में किया जा रहा है। आज सनातन धर्म किधर इकट्ठा हुआ है, 500 साल बाद मंदिर बना है, किधर हिंदुस्तान में आज हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो हमारा तो बस यही कहना है कि दलित वगैरह जो समझ रहे हैं कि हमको छोड़ देंगे, हम नहीं समझते कि उसे छोड़ दे रहे। कारण राम युग में दलितों को ही राम ने पकड़ के आगे चले, केवट ये कोई हिंदू नहीं, जो तो दलित ही थे, सब जो है उनको ही पकड़ के, जो क्या बोलते हैं शबरी माता, उनसे बड़ा उदाहरण तो और कोई दे नहीं सकता। क्या उनके झूठे बेर राम ने खाए तो दलित समझते तो पीछे फेंक देते, वो खाते ही नहीं। तो इससे बड़ा और वो युग आ रहा है, इसमें सब दलितों ने उन्हें साथ देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सब एक होके जो इनको विरोध कर रहे हैं उनको हमने विरोध करना मांगता, उनको कहीं रखो मत, मैं बोल रहा वहाँ हिंदू राष्ट्र। तो आप लोग यहाँ पर आए इतनी दूर से, तो आपको लगता है कि यहाँ पर अयोध्या में लोगों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि ये जो राजनीति हो रही है, क्या वो उनसे ज्यादा उससे फर्क पड़ रहा है, या क्या वो अपने सेलिब्रेशन में मग्न है? नहीं, कुछ तो अभी जो फर्क तो क्या पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि जो इस तरह जो आज जो उत्सव मनाया जाएगा वो पूरे भारत, पूरा विश्व मनाने वाला है। और रही राजनीति की बात, ये हमारे देश में कायम स्वरूप होने ही वाला है। राजनीति के सब जगह अपने अपनी जगह साइड में है, और ये उत्सव मनाने में पूरा भारत देश लगा रहेगा। आगे के 2 दिन में काफी सारे सेलिब्रेशंस का वो रहेगा, काफी सारा प्रेपरेशन होगा, काफी सारा काम भी आपको करना रहेगा आगे के 2 दिन 22 तक। हाँ जी हाँ, 22 से आगे भी हमारा काम है। 26 तारीख तक सेवा का पूरा कार्यकाल है ना हमारा 10 days का है। So that essentially is what's happening on the ground, where the people in fact are saying they are talking about the politics around the entire issue of the 22nd of January. They are also saying that this is a second Diwali. They are also saying that they're not really perturbed by these kind of statements, but they are going to go on the celebration till the 22nd of January. And coming back to what we were speaking about as well, Shivangi, and this sentiment essentially echoes what decisions have also been taken by the government for the government employees as well, as they will be given a half day. But here from the ground here in Ayodhya, people are gearing up for 22nd of January like never before. In fact, they say that they've never seen Ayodhya like this before. They have never seen Ayodhya so lit up, so decorated, and so hustling and bustling with the people from across the country who come here and who are just coming to volunteer their services, who are just coming to be in this city, even if they will not be able to make it inside of the consecration ceremony.
कृपया